Hi guys, welcome back. So today in this lecture will we discuss how to send a welcome email with attachments to a new user. Let's suppose I have a user object. When any user is created, when anyone user is created, then a welcome email and your offer letter and letter of authorization will be sent with attachments, which will be sent to the this particular email which is created by new users. Okay, so let's take an example and create how to do this. Okay, I am going to my setup. Okay, in the setup, in the quick find box, search classic email template. So here is the classic email template. I click on this. Okay, click on new template, and if you choose to send an email with attachment, then you have to choose a text. Okay, otherwise if you choose with सिर्फ email ही भेजना है आपको, तो you will choose the custom without यूजिंग क्लासिक लीडर है। तो मुझे अटैचमेंट के साथ भेजना है, तो मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा। ओके, मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट किया। ओके, सो यहाँ पर आ गया एंड अवेलेबल फॉर यूज़ ईमेल टेम्पलेट है वेलकम ईमेल। ओके, वेलकम टू द ट्रेलहेड टाइटन्स कम्युनिटी। एंड ईमेल बॉडी में मेरे पास एक ईमेल बॉडी था, मैं पहले से कॉपी करके रखा था। हाय यूज़र नेम। हाय, ये यूज़र नेम कहाँ से आया मैं बताता हूँ। हाय किसी का नाम होगा जिसको पर्टिकुलर मेल जाना, तो उसका नाम लेने के लिए, मैं डायनेमिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फील्ड है, यूज़र ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पर आपको भेजना है। सपोज मुझे यूज़र जब क्रिएट होगा तब भेजना है, तो यूज़र फील्ड पर गया, मुझे नेम नेम यहाँ से पकड़ो एंड या यूज़र नेम है, इसको ओके, इसको कॉपी कर लो एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर पेस्ट comma. Okay, hi user and welcome to Trailhead Titans Company. We are thrilled to have you join us as a new senior software engineer. Our team is a diverse and supportive group. We are looking forward to seeing unique contribution you will bring. Okay, this is the content of this, and best regard Abhishek, technical recruiter, Trailhead Titan team. Okay, so this is how. Okay, okay, when you click save, see here the attachment section are there. When you hit save, click on this attach file and attach the document which you want to attach when you send a mail with attachments. So I go to my document. Yeah, I go to my document. Here is two, letter of authorization and offer letter. I selected both this. Okay, attach file and click done. Okay, first is attach, second same चीज़ है, letter of authorization, वेयर इट इज, चला गया क्या? ओके, फिर से मैं करता हूँ। ओके, ऑफर लेटर, ओपन, अटैच फाइल, फिर सेम चीज़ है, ऑथर ऑफ ऑथराइजेशन, अटैच फाइल एंड क्लिक डन। सो आप देखेंगे यहाँ पर, एक डिलीट कर देता हूँ, दो बार अटैच हो चुका है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ऑफर लेटर दोनों अटैच हो गया है। ठीक है, अब मेरा ये क्लासिक ईमेल टेम्पलेट के बाद मेरे को अब जाना पड़ेगा ईमेल अलर्ट पे। ईमेल,
ठीक है, मैंने ईमेल अलर्ट पर क्लिक किया एंड डोंट शो मी दिस पेज अगेन, क्लिक कंटिन्यू। आफ्टर दिस न्यू ईमेल अलर्ट, क्लिक ऑन दिस न्यू ईमेल अलर्ट। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालूंगे, वेलकम ईमेल, यूनिक नेम, ओके, ईमेल टेम्पलेट ने ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, यूज़र, एंड इस यूज़र ईमेल टेम्पलेट जो अभी आपने वेलकम ईमेल बना रखा है, दिस वन, सेलेक्ट दिस, ओके, एंड ईमेल फील्ड होगा, इस ईमेल फील्ड को सेलेक्ट कर ले। जो ईमेल में आपकी ईमेल फील्ड में कोई भी ईमेल पड़ेगी, उस ईमेल पर पर्टिकुलर वो फायर होगा, उस पर ईमेल जाएगी, ठीक है। क्लिक सेव, ओके। अब आपको जाना है फ्लो में, क्लिक ऑन दिस फ्लो, क्लिक न्यू फ्लो, and then start from scratch, click next, record trigger flow, select record trigger flow, click create, ओके। सो ऑब्जेक्ट कौन सी होगी, यूजर ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट आपका बनेगा एंड व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, तब ये जाएगा मेल। देन आफ्टर दैट अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक डिसीजन बॉक्स। उस डिसीजन बॉक्स में आपका क्या होगा, इस डिसीजन बॉक्स में होगा कि जब आपका न्यू यूज़र क्रिएट होगा तभी, तो न्यू यूज़र, लेवल न्यू यूज़र, ओके, ठीक है, न्यू यूज़र, यस, ओके। सो इससे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला फिल की नया बन रहा है कि नहीं, वो चेक करनी पड़ेगी। सो मैंने न्यू रिसोर्स पर गया, फॉर्मूला इज न्यू boolean and is new, ओके, ठीक है, चेक सिंटेक्स वैलिड, ओके, क्लिक डन, ओके। अब यहाँ पर बैक टू लूज पोजीशंस, देन थोड़ा इसको सेव कर लेता हूँ मैं, सेंड वेलकम ईमेल टू न्यू यूजर, ओके, क्लिक सेव, ठीक है। अब इस डिसीजन बॉक्स में आप क्या था, जो अब मैंने अभी फॉर्मूला बनाया था, इज न्यू इक्वल्स ट्रू तभी, और यूज़र आपका एक्टिव होना चाहिए, ट्रिगरिंग यूज़र इज एक्टिव, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये दो जब कंडीशन मेट करेंगे तब आपका सेंड ईमेल अलर्ट, कौन सा ईमेल, वेलकम ईमेल, यही है हमारा, ओके, सेंड ईमेल, रिकॉर्ड आईडी आपका होगा ट्रिगरिंग यूज़र एंड सेलेक्ट आईडी, वेयर इज द आईडी, यूज़र आईडी, अकाउंट आईडी होगा, प्रोफाइल, ट्रिगरिंग यूज़र आईडी, ठीक है, क्लिक सेव, ठीक, क्लिक एक्टिवेट, okay, let's check whether it will be working fine or not. I'm going to my home tab, and in the home I go to setup, and in the setup click search user, click on this user, so click new user, and you will see a
information setting, that is user ID general information. Firstly, Ashutosh. Okay. Some and alias will be okay. Email will be this Salesforce Academy 04@gmail.com, and user license will be look. Suppose chatter free users. Okay. Anything else? No. Click. Okay. Click save. Say it will be like duplicate. Okay. No worries. I changed the username Salesforce Academy 4@gmail.com. See, a new user has been created. Let's go to my mail and check whether it will be like mail has to be sent or not. Okay, I go to my Salesforce Academy. Salesforce Academy. Here. I'm going to my mail. See, here is a mail Salesforce flow. When I click on this, hi Salesforce flow, welcome to the Trailhead Titans. We have tried itna. This is itna. See, two attachment are to be attached. Okay. So this is how you can send a email when a new user with attachment. This is how you can send a email with attachment when a new user has been created. Okay. So I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future update. Thank you guys.